मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है करतारपुर कॉरिडोर को लेकर। For this many years, what is the official stance of comment from the government of India side? Our map accurately depicts the sovereign territory of India. The new map has in no manner revised our boundary with Nepal. The boundary delineation exercise with Nepal is ongoing under the existing mechanism. We reiterate our commitment to find a solution through dialogue in the spirit of our close and friendly bilateral relationship. At the same time, and I think this is very important to note, that both sides should guard against vested interests who are out there to create some differences between the two countries. Ravish, yesterday the Finnish foreign minister in interviews to the Hindu and Times of India said that the MEP delegation that visited Kashmir was not representative enough, did not have the political expertise, and he actually argued that UN diplomats and observers should be allowed in. Given that Finland has the EU presidency at the moment, your comments please. Smita, on MEP, I think I have clarified our position, in the last briefing, perhaps. On the visit to the Union Territory of Jammu and Kashmir, our position. Our leaders have spoken about it, and I have also spoken that we have to look into the intent of the visit, the context, and also the ground situation, and I think these are the factors which has to be taken into account before any decision on the visit by anybody to the UT of Jammu and Kashmir can be considered. Yeah, Amity. Hi. After the RCEP Leaders Summit on Monday, the MEA very categorically said that India had exited the RCEP. But subsequently, other RCEP members, including New Zealand, China, and also Japan, they've said that 15 countries have actually agreed to work with India on its sensitivities and hope to resolve them so that all can sign the agreement together. And the joint statement, which was issued after the leaders' meeting, it also talks about, a decision being taken by India based on the success of the talks on sensitivities. So, what exactly is India's position on RCEP? Frankly, there is nothing new. Our position has been very clearly articulated in the briefing which was done by Secretary East in Bangkok. I can only share with you that our concerns and requests on this matter, they are available with the other 15 members of the RCEP. You are aware, and we have shared that we have negotiated with a very clear-eyed views of our interest. We negotiated hard. If we get a firm indication that our core interests will be accommodated, at that stage we can think of taking any further decision in this matter. Sinjoy. Sir, you mentioned this before, but there's new information that is coming in of a large number of Chinese technicians and engineers working on the China-Pakistan economic corridor. In fact, at just one factory, the Pakistan Aeronautical Complex, there are over 300 Chinese nationals. Also, sir, on the 23rd of September, there was a meeting in Beijing between Chinese and Pakistani officials, where, keeping in mind the security situation, the Chinese have offered to take more steps, including security measures and smart measures. Since this is Indian territory, how does the government react to it? No, Srinjoy, our views on BRI, and CPEC is a very important component of BRI, has been very consistent. After we came out of that statement 2 years ago, we have maintained that position. Number one. Number two, our position on the Pak-occupied Kashmir is also very well known. We consider that it is an inalienable part of India. If you look at these two statements from our side, which is very clear
you know what we are talking about. We feel that any project or any activity in the disputed in the territory, you know, in the Pakistan occupied territory, which we say that it belongs to us, we have conveyed our concerns in the past. On the meeting between you know, Chinese and Pakistanis, frankly, I have no comment at this point of time. You know, if it relates to security being provided to the projects in the CPEC, you know, that is for them to decide. But yes, I think on CP itself, on BRI, I think our position has been clear. We have articulated in the past. It remains the same. Yeah. Sir, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद जब दोनों देशों के रिश्ते तनाव में थे, उसके बाद से चीज़ें काफ़ी बदली हैं और अब ये करतारपुर का शुरू होने जा रहा है कॉरिडोर। तो क्या भारत सरकार की क्या पोजीशन, क्या मानते हैं कि पाकिस्तान के रुख में अब बदलाव हुआ है और स्थिति बन रही है कि अब बातचीत जहां शुरू हो सकती है? नहीं, देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि जो शांति का जो रास्ता है वो उसके लिए प्री कंडीशन करतारपुर कॉरिडोर है। ये शुरू से हमने ये कहा है कि ये एक मैटर ऑफ फेथ है और इसको किसी बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म या बायलैटरल टॉक्स के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। हमारा पाकिस्तान से डिमांड जो रहा है वो बहुत ही क्लियर है। हमने उस डिमांड में कभी नहीं कहा है कि आप पाकिस्तान ये करतारपुर कॉरिडोर को चालू करें। हमारा डिमांड रहा है कि जो आतंकवाद के खिलाफ जो आपने एक्शन लेना चाहिए, जो क्रेडिबल वेरीफाइबल एक्शन लेना चाहिए, वो आपको हमें दिखाना पड़ेगा। तो जो आप बता रहे हैं कि हमारी बातचीत होगी या नहीं होगी, वो इसलिए नहीं हो सकती कि जिस मामले पर अभी मामला अटका हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान को हमें दिखाना पड़ेगा कि उनके देश में और ये उनके जो टेरिटरी हैं जो जिसके वो कंट्रोल में है, वहां जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स बैठे हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया है और फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है। तो ये करतारपुर कॉरिडोर तो दूसरा है, इसको इससे लिंक करके नहीं देखा जाए। सर, मेरा एक सवाल है, एक बॉलीवुड की मूवी आ रही है पानीपत, उसको लेकर जो है अब विवाद हो रहा है। जो अफगानिस्तान एम्बेसी ने किसी तरीके का कंसर्न रेज किया है और वो चाहते हैं कि INB मिनिस्टर से मुलाकात की, इसके बारे में कोई जानकारी अगर आप क्या सीरियसली ये सोच रहे हैं कि मैं बॉलीवुड फिल्म के बारे में कमेंट दूं? देखिए, बॉलीवुड फिल्म है, उनकी स्क्रिप्ट होती है और पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कोई हिस्टोरिकल फिल्म बन रही है, पहले भी बनते आए हैं। और अब इसके बारे में वो क्या डिपिक्ट करते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम्स हैं, सेंसर बोर्ड है, उनसे क्लियर होता है। और जो आप देखते हैं बॉलीवुड फिल्म में, अगर आप उसको सच्चाई मान के चलने लगे तो बहुत मुश्किल बात होगी। उसमें बहुत चीजें दिखाया जाता है। तो बॉलीवुड फिल्म में क्या आता है, नहीं आता है, क्या कहानी है, नहीं है, उसका उन्होंने क्या डिस्क्लेमर दिया है, नहीं दिया है, वो अब फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। बट फिल्म को फिल्म ही रहने दीजिए, उसको मेरे ख्याल से तथ्य से जोड़ने की जरूरत नहीं है। कलोल। Sir, is the government considering cancelling the OCI card of author Atish Taseer in response to an article he wrote for the Time magazine? It's being reported right now. No, I'm actually confused. I mean, how do you scrutinize an OCI card? How do you scrutinize? I mean, you apply for an OCI card, and if there are certain conditions which you fulfill, and there are certain documents which you have to submit, if you have submitted those documents, then you are eligible for an OCI card. But yes, I mean, there are certain conditions under which an OCI card is liable to be cancelled. Now, I again can't comment, and I have said in the past that for us to comment on individual cases of OCI and passport, so and so has not got a passport, this individual has not got an OCI, is not possible. But yes, within the principles of how an OCI card should be issued or can be cancelled, if it relates to that, if it fits into that category, then action will be taken. But to put it very briefly, I am not aware about this specific case, and I am also not sure as to how the scrutiny of an OCI card is done. Either you issue it, and if it is issued, and if you find that he is not eligible, no longer eligible, and if it fits into a certain criteria of cancellation of an OCI card, then the OCI card will be cancelled. Sir, my question is related with Kartarpur corridor.
How people will pay this $20 fees? What is the mechanism about this? Who will collect the fees? No, ये तो आप जाएंगे जब आप रजिस्टर करेंगे और वहीं पर सारी all the details of how the entire journey is to be conducted is available on the website which has been launched by the Ministry of Home Affairs. People who are undertaking the journey, they are aware. It is just that they have to carry this amount with them, and the payment has to be made. गूगल प्ले पर कुछ प्रो खालिस्तानी ऐप्स हैं जो चल रहे हैं, फरवरी 2019 से चल रहे हैं। क्या इसको लेकर के कोई एमईए ने गूगल से या कुछ बातचीत की है? मेरी जानकारी में नहीं है कि हमने बात की है, बट जब भी हमारे पास ऐसे इंफॉर्मेशन आते हैं जो ऐसे तथ्यों को और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ावा देते हैं, तो समय समय पर हमने इस मैटर को टेकअप किया है। शालिंदर सर, अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने एक और चिट्ठी लिखी है, तीसरी चिट्ठी है उनकी ये, और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी चिट्ठियों को जवाब नहीं दिया जाता है तो ऐसे में या तो ना कहे सरकार, अगर ना नहीं कहती है या ना कह दे तो उसके बाद वो प्रोसीड करेंगे पाकिस्तान को एज ए नॉर्मल सिख श्रद्धालु। तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना क्लियरेंस के जा सकते? नहीं, देखिए उनको क्या करना है वो जाने। मैंने अपना बता दिया है कि जो ओकेजन है वो बहुत बड़ा ओकेजन है और इसमें एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करना और वो कैसे जा सकते हैं, कहां से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे नहीं जा सकते, कैसे जा सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस फोरम से मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। किसी एक शख्स के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मान लीजिए कोई भी शख्स है जिसका नाम फिलहाल उस लिस्ट में नहीं है, क्या वो उस पे जा सकता है? नहीं, तो ये तो बात क्लियर है कि देखिए जो 9th को जिसको जाना है उसका नाम तो जो इनॉग्रल लिस्ट हमने भेजी थी, जो जत्था में जा रहे हैं, वो हमने पाकिस्तान को भेजी है। अब हमने कहा कि जिसका पाकिस्तान को चूंकि जवाब नहीं आया है, हम मान रहे हैं कि जो उसमें 570, 600 जो नाम है, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो सारे नाम पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने ओके कर दिया है उन लोगों को, और जो जा रहे हैं उनको पता है कि कौन कौन है उसमें। हमने उन सब लोगों को बता दिया है कि आप उसके लिए तैयारी करें और जा सकते हैं। पाकिस्तान ने अब कहा है कि लिस्ट की जरूरत नहीं है, पहले शेयर करने की जरूरत नहीं, तो ऐसे में अगर कोई इंडिविजुअल जैसे कि मैं जाके खड़ा हो जाऊँ तो आप मुझे रोकेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो MOU है ये काफी मीटिंग्स के बाद, नेगोशिएशन के बाद ये एग्री हुआ है। पाकिस्तान को कोई हक नहीं बनता है कि अपनी तरफ बोलें कि अब ये हमने बदल दिया, वो बदल दिया। और ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी 10 दिन 15 दिन हुए हैं साइन किए हुए, यही सब चीजें उनको करना तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? ये जो पोस्चरिंग है, और यही मुझे हमेशा डाउट होता है कि ये पोस्चरिंग क्यों करते हैं। अगर यही उनकी सीरियसनेस थी, अगर यही उनका था कि हमें सबको फैसिलिटेट करना है, हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये एग्जैक्टली जिस समय नेगोशिएशन हो रहा था उस समय कर सकते थे। बट ये बार बार ये आफ्टर थॉट आना कि अब हम ये नहीं करेंगे, अब तरफ ही नहीं लेंगे, तो ये लास्ट मोमेंट में अपने आप को दिखाना कि हमने इतना बड़ा कंसेशन किया है, ये कंफ्यूजन क्रिएट पैदा कर रहा है। Mike. A clarification on the same thing, because in the second letter, at least of what I've seen of Navjot Sidhu's, he said either on the 9th of November with the Jatha or 8th of November via Vaga. I'm awaiting a visa, which he got eventually. So he has a visa on the 8th of November, minus the political clearance. If he tries to cross over, what happens? What is the repercussions? It's speculative. You see, I think, let me kind of just explain. I mean, there are different categories of people who require different categories of clearances. And it all depends on whether you are going for an official visit or a private visit. Now, depending on that, a certain clearance is required. Now, people who are undertaking the journey, they should be aware as to what kind of journey this constitutes. And according जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।